Hello, ladies and gentlemen. How are you feeling today? Great, or unwell, or bored, or etc. etc. So, I am pretty much bored of these regular responses, and I feel you are too. So, today I have got you three amazing responses to the question, how are you feeling today? So, the first word is enlivened. Enlivened basically means like feeling cheerful, animated, energized, एकदम lively feel करना, alright? And the word itself contains live, तो आपको याद करने में easy होगा. Enlivened, lively feel कर रहे हैं, alright? So the next time if you want to answer that you are feeling great, you can say I'm feeling enlivened today. The next word for today is indisposed बेसिकली मीनिंग होता है व्हेन यू आर फीलिंग अनवेल, सिकली थोड़ा फील हो रहा होता है, नॉट सो वेल, नॉट सो गुड, उस काइंड में हम यूज करते हैं. ओके, तो अब इसको याद कैसे करोगे? तो जब आप एकदम सिक फील कर रहे होते हो, नॉट वेल यूज कर रहे होते हो, तो ऐसा लगता है हमको डिस्पोज ही कर दो, हमें कुछ काम करना ही नहीं है, राइट? तो इन डिस्पोज. Okay, so next time you want to ask for leave from your boss, instead of saying I'm feeling unwell today, you can say I'm feeling a bit indisposed today, and your boss will surely grant you leave. Okay, the third word for today is indolent. Indolent meaning होता है जब हम बहुत lethargic सा, बहुत lazy सा feel कर रहे होते हैं, अनवेल नहीं होते, बट हमें कोई काम करने का मूड नहीं होता बेसिकली, है ना? तो इसको हम indolent कहते हैं. अब हम इसको याद कैसे करोगे? तो जब हम लेजी होते हैं तो हमें लगता है ना हम लेड बैक हो जाएं और जो तुमको लेना है ले लो. ओके, तो लेंड कर दो, जो भी, जो तुम्हें जिसको जो करना है करो. आई एम नॉट इन टू इट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम यू डू नॉट वांट टू वर्क, तो बॉस को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते नॉट इन अ मूड, तो आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अ लिटिल इंडोलेंट टुडे, सो लेट मी हैव सम रेस्ट. So I suppose you loved today's words, and please comment, share and like my videos, and I'll come up with the next three words tomorrow. Thank you.